Vedna, and your host for today. Welcome you all on the behalf of Sarkari School. Today, we all are gathered here for a session on awareness on menstrual rights and awareness and schemes by Sadaf Zabeen. Many people are not aware about this, so our only objective is to to promote awareness on the same. Before we start the event, I would like to invite Himani so that she can brief a little about the organization as well as the project. Sarkari School. This is an initiative to build a platform for those working in the field of school education, upliftment the future of younger generation through their hard work. Those who are not related to government or any organization. Sarkari School works on the upliftment of government school children, providing them a platform to learn and grow. Some of the government teachers themselves are maintaining the real meaning of guru. तो हम लोग भी उनके upliftment, उनकी help और उनकी growth के लिए काम करते हैं. Now I would like to tell you about our project Vedna. Project Vedna intends to create awareness campaigns in rural regions to minimize school absenteeism and dropouts among girls after menstruation. With the active participation of adolescents and a focus on normalizing period taboos and stereotypes. To promote public engagement, we actively use social media channels to host interviews, slogan writing competition, and open mic competitions around this issue. In the past few months, Team Vedna, consisting of hardworking individuals, has managed to successfully conduct many events such as poetry sessions, webinars, special lectures, all revolving around menstruation and women's health. Thank you, Prerna. I think someone's mic is on. Please mute it. Now we would like to introduce our guest of honor, Miss Sadaf Zabeen. She is a final year law student at Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi, and passionate to work for women's rights. She has completed her graduation from Delhi University studying computer science. Earlier, she was an assessor at QCI under DCPCR. She is selected as a fellow in Teach for India cohort 2022. Now, without taking much time, we'll start the event. I invite our honorable guest, Mrs. Sadaf Zabeen, to tell us about menstrual rights and schemes. Over to you, ma'am. Thank you so much for the warm welcome. If we see the menstruation through the human right lens, then there are certain basic rights are attached to it. सबसे पहले like human rights to water and sanitation, human right to education, and then human right to work, human right to non-discrimination and gender equality. So firstly, I will describe basically about the human rights to water and sanitation when it comes to the human basic rights to like menstruation. So women and girls encounter difficulties in managing hygiene through menstruation when there is not an enabling environment to do so, when they have difficulty in accessing water, sanitation. So proper sanitation facilities honi chahiye in order to maintain the menstrual hygiene. And then comes to the human right to health. Human right to health is another important precondition
Hello, am I audible? Yes, you are, ma'am. Okay. So continuing with that, like I was talking, like human right to work. So right to freely. Am I audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sorry for the inconvenience. And then, No as we are problem, talking ma'am. about the human right to work, so right to freely choose or accept work, as well as the right to just and favorable conditions of work, which includes the right to safe and healthy environment condition. Like when someone wants to work, so just because of menstruation they are not supposed, like you cannot do the work, so this is like violation of their human right to work. Then comes to the right to non-discrimination and gender equality. So equality and non-discrimination from the foundation of all human rights. Like it is a foundation of all human rights. In many, if not in most countries, women and girls face imposed or self-imposed restrictions on their daily lives during menstruation, such as isolation, abstention from religious rituals, bathing, touching food, or cooking, among others. Like these are the factors which is which violates human right. So we'll be talking about the certain schemes related to the menstrual hygiene. So there are several governments and non-government programs that have promoted menstrual hygiene through health awareness schemes. The Ministry of Health and Family Welfare in 2011 itself स्कीम लॉन्च की थी 2011 में फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर इन रूरल areas. The major objective of the scheme are to increase awareness among the adolescent girls on menstrual hygiene, to increase access to and use of high quality sanitary napkins to adolescent girls in rural areas, to ensure safe disposal of sanitary napkins in an environmentally friendly manner. A range of EIC material has been developed around menstrual health system using 360-degree approach, like to create awareness among adolescent girls about safe and hygienic menstrual health and practices, which include audio, video, and reading materials for adolescent girls, and job ads for ashas and other field level functionaries for communicating with adolescent girls, and training of asha workers also included in this one. And in Andhra Pradesh, the state government launched a scheme whereby monthly awareness classes will be taken for students studying class 7th to class 12th. Then there comes a Ramansha program, which is like very important. It comes in 2018. Though ये program reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health पे है, लेकिन as we are discussing the menstrual hygiene, so we will be covering like the provisions adolescent health में क्या क्या आते हैं. So adolescent girls के लिए इसमें काफी provisions है रमंचा प्रोग्राम में. Like menstrual hygiene में अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिंस बताया जाता है इसमें, और फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स है. टर्शरी हेल्थ केयर में जैसे दिल्ली में सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल है नॉर्थ प्लेस में, तो वहाँ पे स्पेशली एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स है जिसमें वहाँ पे स्टूडेंट एडोलेसेंट गर्ल्स को रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं. और उसमें देन इंफॉर्मेशन काउंसलिंग फॉर टीनेज प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसमें बताया जाता है. फिर इसके अंदर एक प्रोग्राम में ये भी आता है कि एडोलेसेंट न्यूट्रिशन भी इंक्लूडेड है. लाइक अनीमिक है तो फिर आयरन आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड इनफैक्ट to spread the awareness regarding the menstrual, Bihar government offers 2 days of menstrual leave to its female employees every month. Women can take their 2 days off on any day of the month with just no justification. There comes फिर दूसरा प्रोग्राम आता है सावला प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, which focuses on nutrition, health, hygiene, and reproductive and sexual health linked to a rural mother and child care centers. So these are the programs which focuses on the awareness of the menstrual hygiene system. And when it comes to the there are several other programs promotes free or subsidized distribution of sanitary pads, like Kishori Swasthya Yojana.
इस स्कीम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड केरला और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट से फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करती है स्कूल में। इन बिहार में क्या होता है कि एडोलेसेंट गर्ल्स को 300 रुपीज दिए जाते हैं जिससे वो अपने सैनिटरी नैपकिन परचेज कर सके under the Kishori Swasthya Yojana. So I think it's a very good initiative of the government. And then comes to the Jan Aushadhi Suvidha scheme by the central government, which provides sanitary napkins at rupees only 1. So I think it's also a very good initiative. And then comes the, well, as I've discussed about the awareness program earlier, so उसमें मैंने बताया था menstrual hygiene scheme के बारे में, तो उसी के अंदर ही आता है सब उसमें मतलब फ्री नैपकिन प्रोवाइड करने की चीजें भी आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स लाइक 10 to 19 ईयर्स तक रूरल एरियाज में। तो इस स्कीम में इनिशियली इन्होंने 2011 में इम्प्लीमेंट की थी और 107 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में 17 स्टेट्स थी, जिसमें 17 स्टेट्स में 107 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पैक 6 सैनिटरी नैपकिन को फ्री डेज बोलते थे वो, उसको ₹6 में इन्होंने रूरल एरियाज में एडोलेसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड किया है। बट फ्रॉम 2014 onwards, funds are now being provided to states and union territories under National Health Mission for decentralized procurement of sanitary napkins packs for provision to rural adolescent girls at a subsidized rate of ₹6 for a pack of 6 napkins. Like earlier, states अपने आप provide करती थी, but after 2014 centers ने इसको एक स्कीम के जरिए लाइक नेशनल हेल्थ मिशन को डिसेंट्रलाइज किया कि सेंटर के जरिए, अब पहले जो चीजें स्टेट करती थी, अब सेंटर के जरिए स्टूडेंट्स सारे एडोलेसेंट गर्ल्स को सब्सिडाइज रेट पे ₹6 फॉर अ पैक ऑफ 6 नैपकिन प्रोवाइड किया जाता था। और द आशा, एज आई टॉक लाइक आशा वर्कर्स थी, वही सारा डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। आपको पता ही होगा आशा वर्कर क्या होती है, जो कम्युनिटी में जो लेडीज होती हैं, जैसे किसी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वहीं की कम्युनिटी में से लेडीज को ट्रेन करके फिर उनको भेजा जाता है मतलब इस आंगनवाड़ी प्रोसीजर्स में और आशा वर्कर में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रियल वहाँ पे ग्रास रूट प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो द आशा विल कंटिन्यू टू बी तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रिसीविंग एन इंसेंटिव और ₹1 पर पैक सोल्ड। तो उन आशा वर्कर को भी ₹1 मिलता था हर जितने भी पैक्स वो सोल्ड करेंगी। फिर एक फिर प्रोग्राम आता है नेशनल Rural Livelihood Mission of Ministry of Rural Development supports self-help groups and small manufacturers to produce sanitary pads। इसमें गांव की लेडीज को सिखा करके कि उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके उन्हें सिखाना कि ऐसे सैनिटरी पैड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट वो खुद भी एक तरीके से अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और सैनिटरी पैड्स से वो कम प्राइस में लोगों को मिल पाएंगे। फिर आता है एक मिशन स्वच्छ भारत मिशन एंड स्वच्छ भारत विद्यालय, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को एक इंटीग्रल पार्ट कहा गया स्वच्छ भारत मिशन के लिए। सो दीज आर द स्कीम्स व्हिच आर बेसिकली राइट नाउ अवेलेबल इन द इंडिया different states and at central level also to spread the awareness regarding the menstrual hygiene system and to provide the like subsidized and free napkins to these adolescent girls. थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। इट वाज लाइक हमें इसके बारे में पहले से तो कुछ भी पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो इसके बारे में कुछ भी उन्हें नहीं पता था। आई थिंक समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज म्यूट इट। Ma'am, so next I would like to ask you that is menstruation a matter of justice? Absolutely. Menstruation is absolutely a matter of justice. When we are talking about justice legal system regarding the menstrual hygiene system, so we have a case regarding the same. Like in Kerala, एक जजमेंट आई थी केरला हाई कोर्ट की तरफ से। साबरी वाला एक टेम्पल था, उसमें मतलब क्या था, मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में बताऊंगी सो दैट आपको एक पूरा एक ओवरव्यू मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें और कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो उसके इसमें यही था कि लाइक एक सर्टेन एज ग्रुप की लेडीज को उसमें अलाउ नहीं किया जाता था उस टेम्पल में।
like 18 to 42, after menopause they are allowed to enter into the temple. So petition फाइल की गई लेडीज के द्वारा कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं, तो फिर उसी की जजमेंट आई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये एक टैबू, जो टैबू अटैच है, स्टिग्मा अटैच है मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग, दैट women are impure at that period of time and they pollute the environment around them. So I think it's absolutely rubbish, and सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये सारी चीजें, ये इस चीज पे विमेन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये उनका लीगल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, एंड आर्टिकल 21 right to liberty. According to these fundamental rights, they are not supposed to exclude from the temple or any other place if they want to go, because just because of like stigma attached to the menstruation, like impure blood, but it is totally a biological process. So you cannot just say that you cannot enter, a woman cannot enter, women cannot do these things. So uh, जिस जजमेंट के द्वारा चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने भी यही कहा था कि exclusion of women from the society will definitely have a setback on their career, on their mind itself. So we cannot do that, and women are allowed to enter into the temple and anything they want to do. So I think it's a matter of legal system भी women को allow करता है जो वो जो करना चाहती है उन्हें करने के लिए. So it's absolutely a matter of justice. Yeah, absolutely, ma'am. मैम अभी हाई कोर्ट गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक ये आया है लाइक पीरियड्स के आधार पर महिलाओं के बहिष्कार पर प्रतिबंध होना चाहिए. So this is a recent high court decision. What are the steps taken to tackle the discrimination which women faces due to menstruation? I have read that petition, बहुत recent judgment था High Court का. So it was said in the petition that the boycott of the women due to menstruation is a violation of human law and fundamental right enshrined in Article 14, 15, 17, and 1921, as we were discussing earlier in the earlier questions as well. So, like as you were saying that Gujarat High Court में की जो जजमेंट थी उसमें जो प्रॉब्लम आई थी, जो केस था उसमें भी यही था कि am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, as I was saying, like उस इस जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें जो केस था वो यही केस था कि उसमें लेडीज को कहा गया था कि आपको प्रूव करना है कि आप मेंस्ट्रुअल, यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट इज अ वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट, लाइक राइट टू प्राइवेसी. लाइक मेरी क्या सिचुएशन है, क्या एक लड़की की अपनी वो प्राइवेसी है विच कैन नॉट बी रिवील्ड. So I think this is the basic violation of human fundamental right. And regarding the how can we tackle these issues, like awareness, and uh, by promoting the health education in the right manner, and the stigmas and taboos attached with the menstrual system, we should be like having more and more uh, programs around the
यस मैम, आई टोटली अग्री कि जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होना ही चाहिए। Hello. यस मैम। Is there any question? Ma'am, do you think we still need some reforms in laws to tackle the issue of period poverty? Period poverty. Okay. See, regarding when it comes to period poverty describes the struggle many low-income women and girls face. Am I audible?